Hello. Yeah, Shivam, good afternoon. Dr. Vijender from YourPedia. How are you? Yes, sir. I am fine, sir. Thank you. Okay, Shivam. So with me, there are two more mentors who will be interviewing you for today for this interview session. And Okay, before we start, Shivam, I want you to give us your little brief introduction. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? What is your BTech percentage CGPA? What is your GATE score and where you want to apply with this score? Okay, sir. My name is Shivam Agrawal, and I was born and brought up in Lucknow, and my schooling and graduation both have done in Lucknow, and my BTech percentage is 71.5, and my GATE score is 840, and I want to apply for PSUs, and my hobbies are cycling and cricket and swimming also. Okay. So, Shivam, when you appear for some mock for interview for some PSU, then questions are asked related to that PSU also. So, unless until you get the call from that PSU, I'm not going to ask you question from that PSU. But our mock interview will be in the direction of PSU only. Fine. So, Yes, sir. Shivam, this you have told something about your hobbies. You said cycling, cricket, and swimming. ये आपकी hobbies Yes, हैं, right? Yes, sir. तो स्विमिंग और साइकिलिंग जो आपने किया शिवम, तो इससे क्या लर्निंग क्या मिलता है हमें? स्विमिंग एज अ हॉबी परस्यू करते हैं आप, साइकिलिंग हॉबी परस्यू करते हैं, व्हाट हाउ इट हेल्प्स यू? दैट इज व्हाट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज. और इनको सीखने से, जब आपने इन चीजों को सीखा, तो इससे एक लर्निंग क्या मिलता है? Yes, sir. So first of all, when we do these activities, cycling and swimming, this is good for our body, and it keeps our body fit, and keep like we learn, and these activities, like if we participate in some competition, that we learn also skills, different skills like strategy and everything. And yes, these two things that I can mention, like body and the strategy. Two things. If I ask you, शिवम, कि क्रिकेट इंडिया में बहुत पॉपुलर एक गेम है, लेकिन कई बार एलिगेशन लगता है कि क्रिकेट, बिकॉज ऑफ द क्रिकेट, बाकी गेम्स को ऊपर नहीं आने दिया जाता इंडिया में. ये बाकी गेम्स ऊपर नहीं आती. लाइक फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में नहीं है. या और कुछ और गेम्स हैं जो क्रिकेट के चलते बाकी गेम्स के साथ फर्स्ट मदरली ट्रीटमेंट होता है. डू यू एग्री दैट? Yes, sir, I agree with that completely. Yes. Okay. So what can be done? I mean, उसको कैसे हम अवॉइड करें? Once upon a time, you know our national game. Do you know what is our national game? Yes, sir. Hockey. Hockey is our national game. लेकिन एक टाइम था हॉकी में हम लोग वर्ल्ड चैंपियन थे at the time of independence. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है. We are not getting much in this. So, what do you say? What should be done? Sir, I think the players involved in different games, we should give them like other opportunities. Like if we see from cricket, there are several players who done activities like advertisement and other things, so that people know them very well. And like if we see them repeatedly on our TV and other videos, so we can see them other than they are playing in the field. So if we make them more famous, like from hockey and football, the players which are involving in these activities, we should give them other exposure also, not just to the field, because everyone will get to know, like every age group will get to know that these are the players who are involving in these games. I think so. And other thing is the tournaments which are held in other games should be increased as such in cricket. ओके. एंड शिवम, मेरे को एक बात हो, जैसे अभी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रही है, तो डू यू थिंक दैट इज द राइट मूव, द राइट डिसीजन? In this thing, I don't want to say much, but I can think that if a government is doing this, there is some reason behind it, like possible reason, because either they are not handle it very well, like efficiency of the management which are handling these PSUs. But yes, if they are doing it, they are not doing it. Also, government should have in that PSUs.
ओके, ये जो प्राइवेटाइजेशन करना होता है या अपने शेयर को डिल्यूट करना होता है, जब गवर्नमेंट अपने शेयर डिल्यूट करती है, इसका एक जी सर। इकोनॉमिक टर्म है, डू यू नो दैट टर्म? जीडीपी। नो, जीडीपी इज नॉट दैट। अपने शेयर्स को दे देना, बेच देना, उसको क्या बोलते हैं? यू हैव सम आइडिया डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट? स्टेक। सॉरी, आर यू टॉकिंग अबाउट स्टेक? नो, स्टेक नो। मैं बोल रहा हूँ स्टेक को, अपने स्टेक को डिल्यूट कर देना, उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमी में? नो सर, आई डोंट नो, आई थिंक। ओके, सो आप गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में मेरे को डिफरेंस बता सकते हैं? Yes, sir. Government sector means the shares all the shares only government has those shares like 100%. But in public sector, government has more than 50%, like 51 or above, and some other shares are being held by the other funds like we can say other PSUs or some LIC companies and mutual funds. ओके, तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट में क्या लगता है तुम्हें, ज्यादा एफिशिएंट कौन है? Sorry, sir. ये जो गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर है, इसमें व्हाट डू यू थिंक इज मोर एफिशिएंट, कौन सा सेक्टर है? विच वन इज मोर एफिशिएंट, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर? Sir, in today's world, I think public sector. पब्लिक सेक्टर इज मोर एफिशिएंट? आर यू श्योर? Yes, sir. I can think only related to PSUs for now. And what about the government versus private, which is more efficient? If we talk about PSUs, sir, in that case, the private companies also take interest. So I think there is more pressure from that side also to do work more efficiently. That's why I'm saying that PSUs are more efficient or public sector. अच्छा, मेरे को ये बताओ शिवम, why you want to join public sector? What is the motivation or reason why you want to join? Sir, first or foremost reason is that it works in our core sector. Like if I am from mechanical, then I can learn more activities in practical situation like machineries and all. I can see and learn from that, because until now we mostly deal with the only theory. This is the first reason, and the second one is like like if you take the example of IOCL, it is a company of very important sector, oil and gas, and it gives a very big effort in the growth of nation, because they can increase the GDP of the country and all. नहीं, लेकिन वो जो लर्निंग आप बता रहे हैं कोर सेक्टर का, वो तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाके भी लर्न कर सकते हैं ना। मतलब कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप ले लें, कोई भी आप कंपनी इंडस्ट्री ले लें, तो उसमें लर्निंग तो आपको होगा ही, यू विल लर्न इन दैट इंडस्ट्री। Yes, sir, but in the government sector there are more scope, I think, because if we see other oil companies relative to the IOCL and ONGC, they do not have, I think, much wide span of working that what they have IOCL and ONGC. ओके, मेरे को शिवम ये बताओ, आपकी जैसे आप ऑयल सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओएनजीसी वगैरह की बात कर रहे हैं आप, तो ऑयल का तो फ्यूचर है ही नहीं। फॉसिल फ्यूल तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो ये फ्यूल ग्लोबल वार्मिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। तो इसका फ्यूचर क्या लग रहा है तुम्हें? ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का क्या फ्यूचर है? ऑयल सेक्टर तो खत्म हो जाएगा। Yes, sir, you are right, but at this time, I think these companies are also trying to divert towards the renewable energies also. Like if we see about the IOCL, it has tied up with some startup of Israel. Its name is Finergy, and which is producing electric batteries. Batteries for the electric vehicles. That's why I think that they are diverting towards these fields also, like renewable energy, and it has also made I can say like electric charging station in the bond with the Ola. लेकिन जो मेन ओएनजीसी वगैरह का एक्सप्लोरेशन का काम है, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम है, वो तो सारा रुक जाएगा। जो मेन इनका काम है, एंसिलरी एक्टिविटी जो तुम बता रहे हो, दैट इज ओके, बट मेन काम है वो तो रुक जाएगा। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनीज, दैट इज माय क्वेश्चन। Sir,
Got the idea? I don't. I'm not able to think more than that for now. Okay. So, Shun, can you tell me what are your favorite subjects in engineering? So my favorite subject, heat transfer, thermodynamics, and machine design and fluid machinery. Okay. So, Jigjeet sir is going to ask you some questions from that now. Yes, sir. ओके शिवम, जो आपने प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस सेंड किया आपका, Yes, sir. एंड आपने मशीन डिजाइन भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताया, तो दोनों को कोरिलेट करते हैं. ओके Okay, sir. तो आपका जो साइनॉप्सिस और वी कैन से प्रोजेक्ट है डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग फॉर रेलवे कोचेस ना. Yes, sir. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताओ शिवम, आप डिजाइन वर्ड से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन? The design is something which can cater some need. Like if we need some device for certain application, based on that application we have to design some device or to produce some device using the like physics and the scientific laws, and then manufacture it. These steps involve the design process. ओके आप मेरे को वेरियस डिजाइन बता सकते हैं कि डिजाइन मेथोडोलॉजी क्या होती है डिजाइन करने की किसी कंपोनेंट को? तरीके क्या हैं किसी को डिजाइन करने के? 3 मेथड होते हैं. Methods I don't know, but if you are asking related to the manufacturing perspective, then there are several manufacturing methods based on the properties we require in the final product, and I'm not asking from that perspective. Okay. So you have mentioned that basically you design that spring for railway coaches, or? Yes, sir. Okay, so can you tell me which type of load act on spring? That axial load and torsional load. No, that is okay, axial and torsional load, but as we know that the spring is going up and down, so this is a basically gradual load, sudden load, impact load, or cyclic load? The fatigue, yes sir, cyclic load. Okay, fatigue ना? Yes sir. So spring में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसकी fatigue resistance ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा हो? resilience एक प्रॉपर्टी है सर जो fatigue की हाई होनी चाहिए. Okay, what do you mean by resilience? The resilience is the capacity of a material which shows that how much energy it can absorb without any permanent deformation in it. Okay. तो आपने जब रेलवे कोच के लिए स्प्रिंग यूज किया तो बता सकते हैं रेलवे कोच में टोटल एक कोच में कितने स्प्रिंग यूज होते हैं? ओके सर, एक कोच में सर मैं 1 मिनट. Eight springs, 16 springs, sir. 16. Are you sure? 1 minute. Are you searching on Google? No, sir. Sir, I am counting, sir. Just, sir, I think 32 springs, sir. Yes. You think or you sure? Sir, I don't know, but you are saying that I'm assuming, sir, a railway passenger coach, sir. No, okay. So, can you tell me that when you अगर आपने जब डिजाइन किया होगा रेलवे स्प्रिंग को तो आपने कुछ लोड अज्यूम किया होगा कि ये लोड एक्ट करता है एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, है ना? यस सर. तो वो कितना वेट होता है? जैसे आप पैसेंजर को बैठा लो एक कोच में और उस कोच का अपना भी सेल्फ वेट है, तो वो कितना का वेट एक्ट करता है टोटल, और पर स्प्रिंग कितना लोड आता है? ऑन ए सिंगल स्प्रिंग. यस. Exact data, sir, I can't say, but order, I think in order of tons, I can say. Yes, sir. नो, बट आपने स्प्रिंग डिजाइन किया तो यार ऐसे आपने, अगर आपने यहाँ पे देखा है कि आपने अकॉर्डिंग टू स्पेस अवेलेबल आपने सॉलिड लेंथ चूज की, आपने ये लिखा ना यहाँ पे, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपने स्प्रिंग का मटेरियल हाई कार्बन स्टील लिया, आपके केस में उसको डिजाइन किया. तो अगर हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने चेयर डिजाइन करनी है,
Yes, sir. तो मैं चेयर डिजाइन करते हुए क्या चीज देखूंगा? पहले सबसे पहले क्या देखूंगा? Sir, weight of the person who is going to sit. वेट ऑफ द पर्सन देखोगे ना. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम इसके ऊपर जो पर्सन बैठेगा उसका वेट होगा फॉर एग्जाम्पल 1000 न्यूटन. Yes, sir. ओके, तो 1000 न्यूटन मतलब आपकी चेयर की कितने टांगे होती हैं? 4 होती हैं. Yes, sir. तो पर जो आपके पास एक टांग होगी चेयर की उसके ऊपर 250 किलो बेसिकली न्यूटन आपका वेट आएगा. Yes. उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि इसके ऊपर तो कंप्रेसिव लग रहा है और ये एज अ स्ट्रक्ट एक्ट करेगा, सिंपल एक बार की तरह एक्ट करेगा, फिर उसको डिजाइन करोगे. Yes, sir. Yes. लेकिन इसमें अब आप स्प्रिंग को डिजाइन करोगे तो आप पहले देखोगे टोटल स्प्रिंग के ऊपर लोड कितना एक्ट करेगा. Yes, sir. Right, sir. तो वो आपने देखा नहीं तो इसका प्रोजेक्ट का फायदा क्या हुआ यार फिर? No, sir. Load, sir. हम लोग को सर पता था, लेकिन सर जो एग्जैक्ट डेटा है सर वो मैं रिकॉल करने में नहीं, अप्रोक्सीमेट आपने कैसे sorry, approximate, sir. I can say that it is in the order of like 10 to the power 3 kg. Okay, no problem. So you have mentioned that you have used a material for spring is high carbon steel. Yes, sir. Okay, so can you tell me the composition of high carbon steel? The high carbon steel, sir, it is without alloy. It was not alloyed in my case. So if it's a high carbon steel, then carbon percentage will be greater than 0.5% in the steel. Greater than 0.5. Yes, sir. Okay, how much greater? 0.5%. So greater than 0.5% carbon. Okay, and और कुछ भी नहीं था उसमें स्टील में कार्बन के अलावा? Simply iron and steel. Iron and carbon. Yes. So there are some material, but their composition was not appreciable, like vanadium and I can say silicon was also there. And आपने कर्वेचर इफेक्ट टर्म सुनी है स्प्रिंग से रिलेटेड? कर्वेचर इफेक्ट. Curvature effect. Sorry, sir. I don't know. ओके, आपने स्प्रिंग इंडेक्स टर्म सुनी है? Yes, sir. क्या होता है स्प्रिंग इंडेक्स? Sir, spring index basically the ratio of mean dia of the coil and divided by dia of the wire of the spring. ओके, यार ये आपने लिखा है कि आपने एनसिस सॉफ्टवेयर का कुछ यूज किया, उसमें फाइनल मेकिंग ए मॉडल एंड सिमुलेट ऑन एनसिस. Yes, sir. क्या है ये एनसिस? क्या है सॉफ्टवेयर के बारे में बताओगे कुछ? सर एनसिस सर एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम कोई कैड मॉडल है उस पे लाइक वट एवर लोड इज एक्टिंग we can show it on the ANSYS model and then like simulate or predict the real situation based on which we can see like our product is safe or not. ओके, तो इसमें बता सकते हैं एनसिस में आपने कैसे कैसे प्रोसीड किया? मतलब इसमें लिखा ना आपने सिमुलेट, तो सिमुलेट वर्ड से क्या समझते हो आप? The simulate word shows that the real situation in which the component is going to work. Like if a spring is going to bear some amount of load, that load we will trying to try to show on the ANSYS or use the software to make apply the load and then see the deflection and the stresses in the various parts of the product or spring. So that we can see whether the allowable deflection is there or not, or whether it is exceeding or not. ओके, तो जब हम स्प्रिंग को मॉडल को एक्सपोर्ट करते हैं एनसिस के अंदर, yes, sir. तो उसके ऊपर कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ती हैं यार. Yes, sir. Yes. तो वो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या लगेंगी आपके स्प्रिंग के ऊपर? Sir, I want to tell you one thing that in my project, I and other person was there, 2 person was there. So basically, I don't know depth of the ANSYS because the ANSYS part was doing that person actually. तो आपने क्या किया था फिर प्रोजेक्ट में? Sir, I was doing the theoretical calculations and the theoretical design, and he was doing like I have done all the analysis
from load to the allowable deflections and the stresses, and then basically it is trial and error method, and I am checking repeatedly whether it is there. नो, जहां तक यार मेरे को एनसीज की नॉलेज है तो उसमें तो ऐसा है कि आपने एक स्प्रिंग बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल उसको देना है, तो वो भी आप एनसीज में चूज कर सकते हो, उसकी कंपोजिशन और उसका जो वायर का डायामीटर, स्प्रिंग की सॉलिड लेंथ, नेचुरल लेंथ, वो आप किसी कैड सॉफ्टवेयर, कैड सॉलिड वर्क्स में, कैटिया में डिजाइन कर सकते हो। फिर आपने उसके ऊपर लोड भी असाइन कर दिया तो वो अपने आप बता देगा कि स्प्रिंग कहाँ से फेल होगा, कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगे, कहाँ पे मिनिमम स्ट्रेसेस होंगे, एंड उसी के ऊपर बेस्ड वहीं पे वो एक आपको टेबल बना के दे देगा अलग अलग लोड के लिए। तो वो तो कैलकुलेशन यार सॉफ्टवेयर ही करेगा, तो आपने उसमें क्या किया? I don't know the software at that time, so I was doing only a theoretical part and was trying to match the software result. ओके। एंड शिवम, आपने बताया हीट ट्रांसफर भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? यस सर। ओके, तो हीट ट्रांसफर में यार एक टॉपिक आता है आपके पास, दैट इंसुलेशन। ओके, तो इंसुलेशन से क्या अंडरस्टैंड करते हो आप? Insulation is basically a less conductive material which is used to apply on the actual surface or actual device to change the heat transfer rate from that surface or that body. That is used to change the heat transfer which is previously going on that surface, or we can say the resistance for the heat transfer was getting changed. ओके, यहाँ पे जो वर्ड आपने यूज किया चेंज, अब चेंज का मीनिंग क्या है? चेंज तो यार अगर कोई चीज कम हो जाए उसको भी चेंज बोलते हैं, अगर बढ़ जाए उसको भी चेंज बोलते हैं, तो यहाँ पे वो डिक्रीज है कि इंक्रीज? Yes, it depends upon the application. For example, if we take example of the electrical wire, in that case we make the insulation of the copper plastic insulation. We do that, and due to this, the heat transfer from the wire get increased, because if it will not, then the chances of melting of wire are possible due to the heat dissipation from the wire. And if we take the example of we can boiler tubes. Boiler tubes. In that case, heat transfer insulation is done to reduce the heat transfer, because in that case water is flowing inside the tube, steam is flowing inside the tube, and the heat transfer from the tube is to be reduced, because it will decrease the temperature of the steam. ओके शिवम, आप ऐसा करो, एक ना बीकर बनाओ। ओके सर। बीकर के अंदर आप ऑयल बना लो जो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। यस सर। एंड इसके अंदर मैंने बेयरिंग बॉल को फेंका जिसका इनिशियली टेम्परेचर था 400 डिग्री सेल्सियस। ओके सर। एंड मेरे को इसको कूल करना है 200 डिग्री सेल्सियस तक। ओके सर। तो बता सकते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा? Sir, I need some properties of the bearing and oil. ओके, तो आप प्रॉपर्टीज जो है अगर मैं आपको दे दूं, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है आपको? Sir, I need heat transfer coefficient and the density of the density of the oil. Okay. And then the I need cross section or surface area or the dia of the bearing. And he last thing is the heat capacity or specific heat for the oil. Okay, अगर ये सभी डाटा में जो भी आप टर्म्स मेरे से पूछ रहे हैं अगर मैं आपको बता दूं तो आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे? सर ये ट्रांजिएंट स्टेट सिचुएशन होती है जिसमें कि हीट ट्रांसफर पहले मैक्सिमम होता है और फिर धीरे धीरे घटता जाता है। तो उस केस में हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसमें कि एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन होती है सर बेसिकली, जिसमें कि जो हमारी हीट ट्रांसफर जो हो रहा है फ्रॉम कंडक्शन टू द कन्वेक्शन, वी इक्वेट बोथ एंड देन सॉल्व
using mathematics, and then we arise on a equation which is exponential basically. Okay. Time taken will reduce exponentially as the temperature difference reduces between the bearing and the oil. Okay. Okay, Shivam, then we give you your feedback. Okay, sir. Okay, so first Jagdish sir will give his feedback to you. ओके शिवम, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था आपका डिजाइन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, उसका आपने सही बताया आंसर. ओके. एंड देन मैंने पूछा था आपसे कि डिजाइन के डिफरेंट क्या क्या आप सोचते कैसे हो, डिजाइन करते हो. तो 3 तरह के डिजाइन होते हैं, अडेप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन एंड न्यू डिजाइन. अडेप्टिव में क्या है, पहले ही कोई चीज बनी हुई है उसको आप ऐसे ही उसको यूज कर लो. ओके. एंड डेवलपमेंट डिजाइन में क्या है, उसमें कुछ आप चेंजेस करो, जैसे कार्स में बाइक्स में करते ही हम लोग, मोबाइल्स में होते हैं. एंड न्यू डिजाइन में क्या है कि आप बिल्कुल न्यू डिजाइन स्टार्ट करते हो. ओके. तो ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था. एंड नेक्स्ट आपसे मैंने जो पूछा था क्वेश्चन, दैट स्प्रिंग से क्या अंडरस्टैंड करते हो, तो वो डेफिनेशन थी, आपने सही बताया, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स वगैरह. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा लोड एक्ट करता है स्प्रिंग के ऊपर, वो भी आपने सही बताया कि सर एक आपके पास यहाँ पे फटीग लोड वगैरह एक्ट करते हैं, यहाँ पे साइक्लिक लोड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था रेजिलियंस का, वो भी सही था. लेकिन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स इन वन कोच कितने होते हैं, वो प्रैक्टिकल आंसर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, उसका आंसर नहीं आप कर पाए. ओके. ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए. पहले आपने बोला 6 होते हैं, फिर आपने बोला आई थिंक 12 होते हैं, उसके बाद आपने बोला 32 स्प्रिंग्स होते हैं. ओके सर, ये आपको पता होना चाहिए. ओके. एंड पर स्प्रिंग लोड, ये भी आपको याद होनी चाहिए. ये टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं, इसको तो रट लो आप, पर स्प्रिंग लोड, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है ये. ओके. एंड कंपोजिशन ऑफ हाई स्टील, जो आप हाई कार्बन स्टील जो मैंने पूछा था, तो उसमें ओनली कार्बन परसेंटेज बता था आपको, बाकी कंपोजिशन नहीं बता था. ये चीज याद रखो कि आपके प्रोजेक्ट में जो भी आपने मशीन यूज की है, मटेरियल यूज किया है, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किए हैं, उसका आपको डिटेल में पता होना चाहिए. ओके सर. एंड नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कर्वेचर इफेक्ट क्या होता है, तो वो आपको नहीं पता था. कर्वेचर इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, जब स्प्रिंग की वायर को आप बेंड करते हो तो इंटरनल जो एरिया होता है उसके ऊपर तो ज्यादा कंप्रेशन हो जाएगा एंड आउटर के ऊपर कम होगा एज कम्पेयर टू इनर. ओके. और वी कैन से जहां पे टॉर्जनल शियर स्ट्रेस एक्ट करता है, टॉर्जनल लोड एक्ट करता है, तो अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, बाहर कम होता है. इसी को कर्वेचर इफेक्ट बोलते हैं. ओके. एंड उसके बाद था स्प्रिंग इंडेक्स का फॉर्मूला बता दो, वो सही था. एंड जो एनसिस सॉफ्टवेयर है उसका डेफिनेशन आपने सही बताया. लेकिन उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि एनसिस के अंदर बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, तो उसके बारे में आपको पता नहीं था, कि जबकि आपका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा एनसिस सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आपने उसमें बोल दिया कि सर ये तो मेरे दोस्त ने किया था, मैंने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया था. ओके. एक्चुअल में आपका जो प्रोजेक्ट है वो एनसिस से ही रिलेटेड है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हीट ट्रांसफर से, तो आपने बताया पहले इंसुलेशन के बारे में सही डेफिनेशन, लेकिन लास्ट में जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी बेयरिंग बॉल वाला, तो जब मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज दे दी, तो उसके बाद आपको मेरे को ये आंसर करना चाहिए था कि सर मैं बायोट नंबर कैलकुलेट करूंगा. अगर तो सर बायोट नंबर बहुत ही स्मॉल आ जाता है तो हम लम्प्ड एनालिसिस यूज करेंगे. और अगर सर इसकी वैल्यू 0.1 से ज्यादा आ जाती है तो सर हम हिसलर चार्ट यूज करेंगे. ओके. लेकिन आप उसको मैथमेटिकल एनालिसिस वगैरह वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिए, जो करेक्ट अप्रोच नहीं है इसका. और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गेट में तो हर साल न्यूमेरिकल आता ही है यहाँ से. ओके. नाउ बजिंदर सर आपको फीडबैक देंगे. ओके. शिवम, आपने क्योंकि पीएसयू की तरफ जाना है, तो आपको ना अपने हॉबीज वगैरह का काफी अच्छा नॉलेज चाहिए. आपको हॉबीज वगैरह का काफी अच्छा नॉलेज चाहिए, जिसमें साइकिलिंग, क्रिकेट, ये इसमें से ना कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, जैसे क्रिकेट इज किलिंग द अदर गेम्स, आई आस्क्ड यू. You will say, no doubt, sir, there is a lot of craze in cricket in India for cricket in people. लेकिन other games are also coming up, like badminton. The moment we started winning some medals in Olympics, badminton में नाम हो गया, wrestling में नाम हो गया, and even hockey में and football में people are coming up. So with passage of time, we will find that new games will come up. And certainly, I think people, government as well as other private organizations and bodies should come forward, especially जब players, जैसे बैडमिंटन में आगे आने का एक जो रीजन था और रेसलिंग में, that was the coach actually.
जैसे जो कोच थे बैडमिंटन के, जो प्लेयर्स थे गोपीनाथ वगैरह, उन्होंने बैडमिंटन को प्रमोट किया. सो the coach and the people who are from different games, they should come forward and motivate people for that. तो आस्ता आस्ता वो come up हो जाएगा. So cricket is not to be held responsible for non performance of other games, but yes, all the people who are involved, I mean the players, the coach, the government bodies also, they should promote other games. That is what you have to think of. Then I asked you privatization of PSUs. तो उसके लिए जो टर्म, इकोनॉमिक टर्म थी, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट. आपने कई बार ये टर्म डिसइन्वेस्टमेंट सुना होगा. इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट विल सेल इट्स शेयर और स्टेक्स. नो दैट इज गुड थिंग और बैड थिंग. यू विल से सर गवर्नमेंट शुड रिटेन द ओनरशिप, but at the same time if government is selling some of its shares and the money which is obtained by selling the shares, if that money is used to make the public sector more strong, its infrastructure investment हो जाए या इसको और अच्छा बॉडी बनाया जा सके, तो that is how it should be. So public sectors, if they are working good, then there is a asset of the nation. But if public sector is loss making, that is a liability. And you should have the view that loss making public sector, when it becomes a liability, sir, then making it privatized is good. Yes. You got the point. So this is how you are to understand. And वो आपने एक एटीट्यूड, तो आपने प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट या अगेंस्ट करनी है. आपने ये बोलना है कि प्राइवेटाइजेशन उसका करो जो लॉस मेकिंग है एंड वो लाइबिलिटी बन जाती है, तो सर देयर इज नो ट्रबल इन दैट. लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंट्री, वो गवर्नमेंट के लिए एक असेट है, सोसाइटी के लिए असेट है, और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा उसी में खर्चना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही खर्चना चाहिए जिसको आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग. प्राइवेट प्लेयर्स को डिसइन्वेस्टमेंट कर देने से बेनिफिट ये होता है कि प्राइवेट जो कल्चर है, दैट कल्चर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, दैट कैन बी एक्वायर्ड. फिर मैंने आपसे पूछा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, पब्लिक या प्राइवेट. तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि सर डिपेंड्स हाउ डू यू डिफाइन द एफिशिएंसी. नो, गवर्नमेंट डील्स नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, बट गवर्नमेंट वर्क्स फॉर सोशल मोटिव. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट जितनी भी बॉडीज हैं, वो इसलिए क्रिएट की जाती हैं कि सोशल डेवलपमेंट किया जा सके. और गवर्नमेंट स्कूल्स में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स आर टॉट, जो अदरवाइज बेचारे नहीं पढ़ेंगे. तो प्राइवेट स्कूल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गवर्नमेंट स्कूल, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स में पर्पज इज समथिंग डिफरेंट, नॉट प्रॉफिट मेकिंग. सो यू विल से कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी एंड प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी की डेफिनेशन अलग है. प्राइवेट सेक्टर नेवर डील्स विद द सोशल मोटिव, दैट इज अ प्रॉफिट मोटिव ओनली. So इस तरीके से आप बोलना कि efficiency is different, but yes, if profit motive is how you define efficiency, then private sector is more efficient, you can say, because their motto is profit generation only. So आप PSU क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो you should have reason. आप इसका आंसर नहीं कर पाए PSU क्यों ज्वाइन करना है. You should always have कि सर PSU is अपने आप में serving in any public sector is a matter of pride, and it offers great career, not in terms of professional growth, but also personal, also time you have for personal requirements also. So there's a healthy balance you can make between professional and personal life. तो इसके साथ, इस जॉब के साथ, everything which you can think of in job you are getting there. There is a job security, there is a salary security, there is a growth, there is a training, there is a reputation. So that is why I want to join public sector. ऑयल का फ्यूचर क्या होगा, आप बोलोगे सडनली सर वी आर इन द ट्रांजिशन फेज, कि जैसे ऑयल से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में जाना है. तो आई एम वेरी श्योर कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू स्टे, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली व्हाट फॉर इट इज वर्किंग, बट ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, and these Maharatnas are having people who are very, very capable people. So I'm very sure the capability and talent of all these people can be utilized in another direction also. If the need arises कि oil exploration या oil से आपने किसी और direction में shift करना है, तो these public sectors will certainly must be thinking the new domain in which they can work, and these organizations are going to stay, they are going to remain, and the people in organizations are also going to remain. And only thing going to change is the profile and the function which they are to do. So I think they can change that. तो ये आपने इस तरीके से आंसर करना था. अब शिवम क्या है कि पब्लिक सेक्टर का जो इंटरव्यू है ना, उसके लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई टोल्ड यू. तो अब हम बहुत से पब्लिक सेक्टर के और भी इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज हम अपलोड करेंगे, तो आप उसकी तैयारी रखना कि जब आपको पब्लिक सेक्टर का कहीं से कॉल आता है, यू गेट इन टच विद निकिता मैम, सो दैट आप उसकी तैयारी कर सकें. वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट पर्टिकुलर प्रिपरेशन,
यू नीड टू नो दैट पब्लिक सेक्टर। जैसे आप बोलते हैं कि सर मेरे को ओएनजीसी का कॉल आया तो अब उसका इंटरव्यू कैसे करना है, तो ओएनजीसी से रिलेटेड हमें इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैंने पीएसयू से रिलेटेड इंटरव्यू किया था, एंड नाउ यू शुड अंडरस्टैंड हाउ इट इज टू बी डन, एंड फ्यूचर में व्हेनेवर यू गेट अ कॉल तो you get in touch with ma'am and so that mock can be done in that particular direction and prepare well for that। और करंट अफेयर से भी वो आपसे पूछते हैं थोड़ा बहुत, तो करंट अवेयरनेस थोड़ी रखो पब्लिक सेक्टर के हिसाब से कि कॉल आएगा तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। फाइन। हैव यू नॉट अप्लाइड फॉर नीति बॉम्बे? No, sir. Okay. Sir, I want some suggestion from your side. Okay. Like I am doing MTech right now Okay. in IIT Madras. Okay, so that I'll just call you again and we can discuss that later. I'll just call you and this clip will come to you and I'll call you and then we can discuss this your issue. Fine? Okay, Shivam, thank you.